तुर्क सदर अर्दवान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. Measures taken deserve a special thanks in our eyes. I would like to thank to the authorities of Pakistan for their great. The fallen soldiers in the terror attacks that took place in Pakistan. I remember them with gratitude and pray for the mercy of God on their souls, and I wish a quick recovery on all those wounded. We support Pakistan in their efforts against all types of terror. The fight Pakistan has against terrorism, I definitely believe, will triumph. To ensure stable lasting stability in Afghanistan and to prevent irregular migration, Pakistan has a critical position. The impacts of the humanitarian crisis in Afghanistan was another issue about which we have been jointly exerting efforts. To Afghanistan, we have supplied more than 4 tons of humanitarian goods and food, and we sent many trains to the region, and we continue cooperating with Afghanistan in this regard. Another issue about the region is the Kashmir issue, and in line with the legitimate expectations of our brothers and sisters from Kashmir, we support the solution of the problem in line with the UN resolutions. As I conclude my remarks, I hope that our talks will be auspicious, and I would like to thank to my dear brother, Mr. Sharif, and his delegation for their visit. And in the person of Mr. Prime Minister, I would like to send my deepest greetings to my Pakistani brothers and sisters from here. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Your Excellency President Rajab Tayyip Erdogan, Honorable Ministers, distinguished members of the media, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I would like to thank my dear brother, President Tayyip Erdogan of the Republic of Turkey, for the very warm welcome and gracious hospitality extended to me and my delegation. Coming back to Turkey is like coming to our own second home. I bring with me the most cordial greetings of the people of Pakistan for our brothers and sisters in Turkey. The relationship between Pakistan and Turkey is embedded in common cultural, religious, and spiritual heritage, transcending boundaries of time, geography, and politics. We look at these sacred trust that has been passed on to us by our forefathers, and which we are committed to hand over to our succeeding generations. This year, our two countries are celebrating in a befitting manner the 75th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. Under my dear brother, President Erdogan's dynamic and visionary leadership, our bilateral relations have scaled to newer heights. I deeply appreciate the sincere, heart-to-heart and productive discussion that we have just had this afternoon. As you are aware, our countries are also engaged in comprehensive discussions at high-level strategic cooperation council meetings, which have become instrumental in fully exploring and building upon our shared interest. I'm very happy to announce that my brother President Tayyip Erdogan has indicated to hold next session of high-level meeting in Islamabad in the month of September. I'm very grateful, Mr. President, to give us this opportunity to play host to you and to your team members, and we look forward to these
very productive meetings, and the people of Pakistan will accord a very warm welcome to you, inshallah. Consequently, we are looking forward to this. Well, we have just dealt with that. A strong business delegation is also visiting Pakistan next June, as has been very kindly indicated by President Tayyip Erdogan, and our team will make proper preparations to hold meetings over there so that we're able to make very solid and productive results. Brother President, there are a number of sectors such as e-commerce, tourism, education, infrastructure development, where Turkey has made exponential progress. And as we discussed this evening, that in the field of hydropower generation and renewable energy, we would be very happy to get support from Turkey in terms of investments. Our Turkish brothers will make investments, make profits, and we will get cheap energy, which will be a very win-win situation. A few days ago, on 20th of May, along with our brother Turkish Defense Minister Hulusi Akar, I participated in the launching ceremony of PNS Badr Miljam Kuwait, another shining example of our wonderful collaboration between our defense industries. We look forward to have further cooperation in attack helicopters and other areas of mutual cooperation. Pakistan and Turkey are natural partners. Many of our challenges are the same as our opportunities. Our two nations have stood by each other in times of need and on issues of core interest. In particular, the people of Pakistan deeply appreciate Your Excellency's steadfast support on the Jammu and Kashmir dispute. Turkey's unflinching support provides great strength to the valiant Kashmiri people who have been subjected to the worst kinds of human rights violation for over 7 decades. I apprised His Excellency, Brother President Tayyip Erdogan, of the threat that Indian action posed to regional peace and stability, including its attempts to change the demographic composition of the occupied territory of Jammu and Kashmir. Pakistan will not abandon its quest for peace, but we are convinced that durable peace in South Asia can only be achieved if the long-standing Jammu and Kashmir dispute is resolved in accordance with the UN Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. For its part, Pakistan has always strongly supported the cause of our Turkish Cypriot brethren, and we will continue to support their legitimate rights and aspirations. Pakistan also stands with Turkey in its fight against terrorism, including the threats posed by FETÖ and PKK. Enemies of Turkey are enemies of Pakistan. Distinguished members of the press, our partnership is a force for perpetual good. We have worked together for decades to promote the shared objectives of a peaceful and stable Afghanistan. Our two countries host the largest refugee population in the world. We are doing so almost exclusively from our own scarce resources. Before I end, Mr. President, let me say something that is very close to our hearts. The emotional bond between our two countries
goes beyond conventional interstate relations and diplomatic niceties. It is a bond that is rooted in history, as we have earlier said a few minutes ago, in culture and in the fabric of our two societies. It is a bond that resides deep in our hearts and sits there and will sit there forever. This bond, this unbreakable bond, is unique in that it connects us at all levels and in all layers. Our states, our governments, our institutions, our armed forces, and above all, our people. There are very few examples in today's world of two nations being so closely intertwined and interlinked, and of course interwoven at so many levels for so many genuine and heartwarming reasons. Today, when I stand here or sit here in front of you with my dear brother, President Tayyip Erdogan, I am overwhelmed with emotion at the love that I've received here, my colleagues, and at the love that every Turkish citizen receives from every Pakistani, and vice versa. And for this, I am grateful to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. May He shower His blessings upon all of us. Ameen. Brother President, I thank you once again for inviting us and for the very warm welcome accorded to us at every level of our meeting and receptions since yesterday afternoon. We look forward to welcoming you, Your Excellency, in Pakistan in the month of September, inshallah, and it will give us another opportunity to renew our brotherhood, our fraternal relations, and further strengthen them. We hope you will have time to visit Islamabad, Lahore, Karachi, Peshawar, and Quetta. Pakistan, Turkish friendship, Zindabad. Pak Dosti Zindabad. Thank you very much. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के ये मनाजिर आपने देखे। वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत सरमायाकारी के हवाले से मुफीद मुज़ाकरात हुए हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का पेशावर में खिताब। कहा, राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने जब मॉडल टाउन में कत्लेआम करवाया उन्हें उसी वक्त जेलों में जाना चाहिए था। राना सना ने फिर बयान दिया है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट से पूछा है क्या पुरअमन एहतजाज हमारा हक नहीं? 30 साल पुराने मुजरिम ऊपर आके बैठ के की स्ट्रगल पॉलिटिक्स नहीं, जहाद। जनरल डायर गुलाम कौम के ऊपर गोलियां चला सकता था, जुल्म कर सकता था। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अपने लोगों पे ऐसे जुल्म नहीं करती, सिर्फ क्रिमिनल्स करते। राना सनाउल्लाह और ये शहबाज शरीफ हैं, जब इन्होंने दिन दिहाड़े मॉडल टाउन में 14 लोगों को कत्ल किया था, 80 लोगों को गोलियां लगी थी, इनको तब जेलों में जाना चाहिए था। सनाउल्लाह का फिर कोई स्टेटमेंट आई है, ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा, डरा रहे हैं लोगों को। जो लोग आ रहे हैं मुकम्मल खातर मदारत का बंदोबस्त किया हुआ है। फैमिलीज निकली हुई थी, औरतें थे, बच्चे थे, तो उन्होंने शेलिंग की। ऐसे शेल्स किए थे वो सिर्फ दहशतगर्द के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। सुप्रीम
कोर्ट से पहले प्रोटेक्शन चाह रहे हैं। पाकिस्तानियों का फंडामेंटल राइट है कि पुरअमन एहतजाज करें। इस तरह के मुजरिमों को आप इजाजत दे सकते हैं? औरतें बच्चे देखें और उनके ऊपर शेलिंग करें। जैसे ही इनका फैसला आता है उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा, फिर हम निकलेंगे। बहुत बेहतर प्लानिंग होगी। इस बार हमारी प्लानिंग कोई ठीक नहीं थी। नक्से अमन के वाक़यात में PTI क़यादत के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं है। कहीं शवाहिद नहीं कि क़यादत ने अवाम को जलाओ घेराव और तशद्दुद के लिए उकसाया हो। PTI के इस्लामाबाद मार्च से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त निपटा दी। फैसले में कहा गया कि एहतजाज ख़त्म और शाहराहें खोल दी गई हैं। आज़ादाना नक़ल व हरकत में कोई रुकावट नहीं। 25 मई के फैसले से मुश्तरका हुकूक अवाम और रियासत में तवाज़ुन पैदा किया। एतबार करके अच्छी नीयत के साथ तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश की गई। अफसोस की बात है कि हमारी नेक नियति को इज्जत नहीं दी गई। पुरअमन एहतजाज आईनी हक़ है, लेकिन रियासत की इजाज़त ज़रूरी है। आर्टिकल 15 और 16 की रोशनी में पाबंदी ना हो तो एहतजाज की इजाज़त होनी चाहिए। कानूनी उज़्र के बगैर किसी को एहतजाज के हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। 12 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में मुतल्लिक़ा इदारों और महकमों से कुछ सवालात के जवाब तलब किए गए हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि सवाल के जवाबात पर मबनी रिपोर्ट 1 हफ्ते में जमा कराई जाए। इन तमाम सबूतों का जायज़ा लेकर फैसला किया जाएगा अदालती हुक्म की तामील हुई या नहीं। तहरीरी फैसले में जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तलाफी नोट भी शामिल है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने असम्बलियों में वापसी की मशरूत पेशकश कर दी। कहा, हुकूमत असम्बलियाँ तोड़ने की तारीख का ऐलान करे तो वापसी हो सकती है। इंतखाबी इस्लाहात के लिए असम्बली में वापस आ सकते हैं। फवाद चौधरी ने बताया कि राना सनाउल्लाह और पुलिस अफसरों के खिलाफ FIR कटवा रहे हैं। सोमवार को राना सनाउल्लाह IG पंजाब DPOs जो मुलव्वस हैं उनके खिलाफ हम थाना अनारकली में एक बाकायदा FIR का इंदराज भी अगले हफ्ते हम करेंगे। हुकूमत जून में अगर वो ऐलान करते हैं असम्बलियाँ डिसॉल्व करने का, मौजूदा इलेक्शन कमीशन राजा रियाज का बनाया हुआ है। लोटे इलेक्शन कमीशन के नीचे तो नहीं इलेक्शन हो सकते। इलेक्शन कमीशन आपने रिप्लेस करना है, सारी जमातों के उस पर कंसेंसस करना होगा। इस मकसद के लिए हमें असम्बलियों में जाके लेजिस्लेशन में हिस्सा लें। जो इलेक्शन रिफॉर्म्स का बिल है बहुत अहम है, बात करें और आगे बढ़ें। शर्त यही है ओनली असम्बलियाँ तोड़ने की एक डेडलाइन। इमरान खान को जो भी नजरबंद करेगा, गिरफ्तार करेगा, फिर पाकिस्तान तो नहीं रह सकता। अपना अलहदा पासपोर्ट बनवा ले। बुलेटिन जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात ने केबल पर ARY समेत TV चैनल्स की बंदिश, नंबरों की तब्दीली और इश्तहारात की तफसीलात तलब कर ली। अरशद शरीफ समेत सहाफ़ियों के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज FIRs की तफसीलात भी तलब कर ली गई। ARY का माइक उठा लें यहाँ से। ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा। चेयरमैन कमेटी फैसल जावेद का कहना था, आजादी इजहार राय पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। चैनल्स की पोजीशन को केबल पर तब्दील किया जा रहा है। कई सहाफियों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी। चेयरमैन कमेटी ने सेक्रेटरी इत्तलात से इस्तफसार किया, वजारत इत्तलात कौन चला रहा है। सेक्रेटरी इत्तलात का कहना था कि मरियम चला रही हैं। मैं आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। अभी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें और उनको कहें कि अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मैं मैनेज कर रही हूँ, मीडिया मेरे हाथ क्यों बांध के रखते हैं। फैसल जावेद ने कहा कि मरियम नवाज तो कहती हैं कि वजारत इत्तलात वो चला रही हैं, उनके कहने पर ही इश्तहारात दिए जाते हैं। जो TV चैनल उनके गुन गाते हैं उन्हें इश्तहारात दिए जाते हैं, जो तनकीद करते हैं उन पर कदगन लगती है। ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा। सीनियर एंकर अरशद शरीफ का कहना था, कुछ अशखास और इदारे खुद को रियासत समझना शुरू हो गए हैं। कमेटी अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए तमाम IGs को बुलाए, पूछा जाए सहाफियों के खिलाफ FIR का इंदराज कैसे हुआ। उन्होंने कमेटी को बताया ARY की नशरियात को बंद किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर खोला गया। सियालकोट, लाहौर और दीगर कंटोनमेंट एरियाज में नशरियात बंद करके अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है।
साबिर शाकिर ने कमेटी को बताया उन्हें धमकियां मिल रही हैं कि वापस आते ही जहाज से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एंकर पर्सन इमरान रियाज ने कमेटी को बताया कि वजीर आला पंजाब उनका घर गिराना चाहते हैं। PFUJ के नायब सदर लाला असद पठान ने बताया सहाफियों के खिलाफ वो मुकदमे दर्ज हुए जो मुल्क दुश्मनों के खिलाफ दर्ज होते हैं। 28 शहरों में केबल पर ARY की नशरियात को बंद किया गया था। मेंबर कमेटी इरफान सिद्दीकी का कहना था कि सहाफियों के तहफ्फुज़ को सियासत की ऐनक से नहीं देखा जाना चाहिए। सेनेट कमेटी सहाफियों के तहफ्फुज़ के लिए उनके साथ खड़ी होगी। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने बताया ARY नशरियात बंद करने के अहकामात केबल ऑपरेटर्स को नहीं दिए, जिस पर चेयरमैन कमेटी फैसल जावेद का कहना था आपके कहने पर चैनल खुल सकते हैं तो बंद भी हो सकते हैं। ये ARY का माइक उठा लें यहाँ से। मुल्क भर में मुख्तलिफ कंटोनमेंट्स और शहरी इलाकों में ARY न्यूज़ की नशरियात केबल पर बंद कर दी गई हैं। कराची, मुल्तान, पेशावर, गुजरांवाला के कैंट एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में ARY न्यूज़ को केबल पर बंद कर दिया गया है। लाहौर कैंट एरिया कवर करने वाले 4 स्टार केबल लाहौर डिजिटल ने ARY न्यूज़ को हटा दिया। लाहौर कैंट में वर्ल्ड कॉल और वॉल्टन कैंट में लोजी टेक केबल ने ARY न्यूज़ की नशरियात हटा दी हैं। लाहौर डिजिटल केबल, 4 स्टार केबल, ब्राइट मल्टीमीडिया केबल और मुगल केबल लाहौर ने भी ARY न्यूज़ की नशरियात केबल से हटा दी, जिसके बायस बेदियाँ रोड, गढ़ी शाहू, कैवलरी ग्राउंड, फिरोजपुर रोड, अस्करी 3 और 5 में शहरी ARY न्यूज़ की नशरियात नहीं देख पा रहे हैं। लाहौर में वतीन केबल ने भी ARY न्यूज़ को बंद कर दिया है, जबकि मुल्तान कैंट एरिया कवर करने वाले अल्फा केबल ने नशरियात हटा दी, जबकि सिटी केबल ने ARY न्यूज़ को आखिरी नंबरों पर डाल दिया है। कराची मलिर कैंट में भी ARY न्यूज़ को केबल से हटा दिया गया। सफूरा चौरंगी और स्कीम 33 के इलाकों में केबल से ARY न्यूज़ की नशरियात हटा दी गई हैं। पेशावर कैंट एरिया में 5 स्टार केबल ने ARY न्यूज़ की नशरियात को बंद कर दिया। पेशावर में यूनिवर्सल केबल ने भी ARY न्यूज़ की नशरियात बंद कर दी हैं। नौशहरा के कैंट एरिया में OK केबल ने ARY न्यूज़ की नशरियात को बंद किया, जबकि गुजरांवाला कैंट एरिया में पैकेसेस केबल ने भी ARY न्यूज़ की नशरियात बंद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ARY न्यूज़ को हटाने या उसका नंबर तब्दील करने से मुताल्लिक वाज़े अहकामात दे चुका है। वाज़े अहकामात के बावजूद ARY न्यूज़ की नशरियात हटाने या फिर चैनल का नंबर तब्दील करने वाले तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ARY न्यूज़ का नंबर तब्दील न करने का हुक्म दे चुके हैं। बुलेटिन में यहाँ शामिल करेंगे ब्रेक। खबर आपको दें कि काजू कंटोनमेंट स्वात में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद। स्वात में डिवीज़न हेडक्वार्टर्स की 15 साला खिदमात मुकम्मल हो गई। FCKP को इंतज़ामी और अमन अमान के उमूर हवाले कर दिए गए। तकरीब में वज़ीर आला महमूद खान, को कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने भी शिरकत की। तकरीब में सीनियर सिविल और फौजी हुक्काम, इमायदीन और दीगर हुक्काम की शिरकत। पाक फ़ौज ने 2018 में इलाके के उमूर सूबाई हुकूमत को मुंतकिल कर दिए थे। पाक फ़ौज सिक्योरिटी और तरक्याती मनसूबों की सपोर्ट के लिए मौजूद थी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।